हेलो गाइस, वेलकम टू फुटबॉल अरीना। और सबको एक इंस्टाग्राम का पेज पता होगा, फेमस पेज, सब फॉलो करते होंगे, टैकल फ्रॉम बिहाइंड। और साक्षात हमारे साथ प्रणय भाई और उसके एडमिन है। एंड हम पता है 2 दिन पहले इन्होंने 20 के फॉलोअर्स अचीव किया है और अभी 20.2 के फॉलोअर्स है। सो आई वांट टू आस्क प्रणय भाई, व्हाट डू यू फेल्ट व्हेन यू अचीव दैट 20 के फॉलोअर्स? व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ इट? So actually, just एक चीज I want to confirm is like I'm not the only admin. Like my यस, यस, brother वी नो। यस, also यस। brother is also there, so he looks out on the back end side. मैं थोड़ा meme side और थोड़ा content side को थोड़ा ज़्यादा देखता हूँ. So we have divided our scope of मतलब part time के लिए. So मतलब अब वैसे ही start किया था. And to be very honest, bro, when I started the page, मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब कि मेरे को कोई amount touch करना है. मतलब मेरे लिए तो like our main target was to touch like 500 followers to be very honest, या 1000 followers to be very honest. एंड जब स्टार्ट किया था तो भी ऐसा कुछ फोकस नहीं था ब्रो कि मतलब कि इतना ज्यादा कि लाइक पीपल विल लाइक आवर कंटेंट दैट मच, या इतने लोग भी हिंदी वाले जो हैं वो फुटबॉल देखते हैं और वो ऐसे मीम्स को रिलेट भी कर सकते हैं. सो दैट वाज pretty much the idea. And like people do, like abhi we touch that feat, of course it's a big feat for us personally, but I honestly don't feel ki matlab 20,000 is like a number. Like मेरे लिए 1000 is also a big number, bro. Like उसके ऊपर जो भी है वो that is just I feel it's good. मीन्स Yeah. मीन्स यू स्टार्टेड एज अ फन, मीन्स अपने पैशन के लिए, अपने मीम बनाने के लिए, ताकि लोग कितना कितना देखते क्या होता है, कुछ करना तो ऐसे ही कर लेते हैं। Yeah, so pehle actually, so it's a very very funny story कि because earlier what I used to do was जैसे कुछ भी ऐसा होता था, so like मैं और मैं और भाई was like हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते थे कि भाई when any we are like we first thing is that we watch a lot of football. Like हम हर गेम देखते हैं, and because we all play FPL also, so हम बर्नली और साउथहैम्पटन का गेम भी अगर चल रहा होता है तो हम वो भी देख रहे होते हैं. Like that is what our हम लोग इतना ज्यादा फुटबॉल देखते हैं. सो हम जैसे ऐसे देख रहे होते थे तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं मैच में, या अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन जिसको इमीडिएटली दैट इट इज लाइक अ मीम मटेरियल. सो दैट यस। वाज द होल आइडिया कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वी यूज्ड टू से कि अरे ये देख, मतलब ऐसे अगर कोई सिचुएशन हुआ देन वी यूज्ड टू रिलेट इट टू अ मीम. So that is how the idea initially started. And then we posted some content on Twitter, and it like people do. हमें पता नहीं था कि भाई लोग ऐसी भी एक ऑडियंस है जिनको ये चीजें समझ आती है apart from us. So that was the idea, and that's how we started. And of course, like if and this is I want to just say to like even you and a lot of creators in football, जो कि पर्टिकुलर है कि नंबर्स डजंट रियली मैटर. एंड आई एम नॉट सेइंग क्योंकि मेरा 20,000 फॉलोअर टच हुआ, लाइक इवन इससे पहले भी हम नंबर्स देखते भी नहीं है, हमें फर्क भी नहीं पड़ता कि उतना नंबर है. आज भी जो लोग हमें मैसेज करते हैं व्हेन वी आर वाचिंग अ गेम, एंड लाइक पीपल हु हैव कॉन्वर्सेशन विद मी सेइंग कि अगर कोई सिचुएशन होता है, दैट इज फॉर मी इज द अटमोस्ट थिंग. बाकी सारी चीजें ब्रो, it's a side thing. Like that is something that we don't focus. दैट्स दैट्स अ वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग यू टोल्ड। लिटरली नंबर Yeah. डजंट मैटर्स, कंटेंट मैटर्स, अवर पैशन मैटर्स फॉर फुटबॉल, हाउ मच वी लव फुटबॉल, दैट मैटर्स, राइट? Yeah. तो चलो हम लोग यूसीएल, द मेन टॉपिक वी विल कम. I will ask about Bayern versus Salzburg. Did you ever expect Salzburg will come back against Bayern, because it was 1-1 and Salzburg played good in first leg? Did you expect a comeback? No, bro. मतलब I don't know, bro. Like I told you, like कौन expect कर रहा होगा साल्जबर्ग को come back करने के लिए, because it's Bayern, bro. Like and Bayern is, I know, like Bayern की भी form recently उतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी नहीं, नहीं रही. अच्छी नहीं. It's not the Bayern that we saw like back in maybe 2019-20 वाली Bayern नहीं है. But like again, and that is the case that you see with a lot of teams जो अपने उस 2 साल के प्राइम पे नहीं है, but they still are a very bigger team. So I didn't, like, personally, if you ask me, I don't think so like there was any chance of Salzburg to proceed. I think Bayern were the favorites for the game. They are favorites even for the title contenders. So I would, personally, I would say कि Bayern would over the edge to थाई उनके पास starting से ही. Bayern is missing Goretzka, I guess. उसके लिए शायद उनकी फॉर्म थोड़ी डिप कर रही है, बिकॉज विंगर्स बहुत ज्यादा खिला दे रहे.
व्हाट आई फील इज दिस, बट दे बट साल्जबर्ग का कभी कोई स्टैंड होगा ही नहीं उनके सामने, राइट? इन देयर होम ग्राउंड बायर्न वी सॉ 8-2 एग्रीगेट, एंड आई एम अ बार्सा फैन, एंड 8-2 तो मुझे हर्ट बहुत ज्यादा करेगा ही सुन के। सबसे ओके। इंटरेस्टिंग चीज जो क्या है, हर ऐसे गेम में ना म्यूलर जरूर होता है। ऐसे कोई भी बड़ा गेम तो उठा यस, ले बूलर। जिसमें जिसमें बीटिंग होती है ना, उसमें हमेशा म्यूलर वहां पे होता ही होता है। बी इट ब्राजील वाला गेम, ब्राजील जर्मनी वाला गेम, बार्सिलोना वाला गेम। बारसा वाला गेम ऑल्सो। हर एक बड़े गेम में जस्ट स्पर्स स्पर्स बायर्न वाला गेम जिसमें गनाब्री ने आई थिंक हैट्रिक मारा यस था। यस 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 तो यस। हर गेम में ऐसा, वो अगर म्यूलर है उस गेम में तो यू नो दैट शिट इज अबाउट टू गो डाउन। सो या Okay, okay. I don't feel there's much to talk about this. Let's go to Inter versus Napoli. What do you feel कि लोटारो ने जब गोल मारा, if there wasn't a red card, लोटारो जब गोल मारा, would इंटर के पास चांस था जीतने का, because they were playing good. लिवरपूल were misplacing their passes, and या लिवरपूल थोड़ी काम थी मेरे ख्याल से, इतना ज्यादा चढ़ के नहीं खेल रही थी। तो व्हाट डू यू फील कि अगर अगर रेड कार्ड नहीं होता तो शायद इंटर पुल ऑफ कर देती, एटलीस्ट अ ड्रॉ, शायद एक्स्ट्रा टाइम में या जाके मैन, कुछ आई होता। मीन अगर आई लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग द गेम, उनको ये फील हुआ होगा कि आफ्टर द गोल, लाइक उस टाइम पे इंटर वर्स ऐसा नहीं था कि लाइक इट जस्ट केम आउट out of the blue आउट ऑफ या मैच नोवेयर, ऐसा। यस यस। Like Inter was playing really good game. Even the first half, they I would say they dominated, or not dominated, but of course they played way better than Liverpool in the first half, and they created a lot of chances also. Uh, uh, Counter attacks we saw few. मतलब थोड़ा hold back पीछे hold करके खेल रहा था, but there was few moments of magic that you saw कि हाँ Inter has a chance to score a goal, and that eventually came out I think in the 60th or यस 62nd यस minute or यस। something. So उसके बाद I think सैंचेज वाला जो सीन हुआ वो तो बहुत ही मतलब जाका वाला मोमेंट हो गया, बट आई थिंक आई ऑनेस्टली फील अगर इन अ यूसीएल गेम लाइक दैट 10 मैन का डिसएडवांटेज होना इज अ लॉट, and especially when you are chasing a goal, that is very that is very problematic for a team. So I think maybe if there would have been 11 players, then I think and uske 11 players matlab 10 players ke baad bhi we saw Inter was still pushing, they were trying to attack यस more, यस। trying to get more chances, तो वो एक बंदे का एडवांटेज तो उन पे हो सकता था, बट as we never know, वो कभी पता नहीं चल पाएगा अब। वाज द रेड कार्ड जस्टिफाइड जो सैंचेज को मिला था? बिकॉज़ ही I see. I don't know, man. There is a big divide. I don't know what you feel about it. आई Uh, फील कि रेड कार्ड पहले ही मिल जाना चाहिए था उसको, जो थियागो वाला जो स्टैब किया था, ही वुड हैव हाँ सेंट ऑफ एट दैट टाइम आल्सो। ठीक है, उसने नेक्स्ट टाइम बॉल को पहले किया था, बट ही वुड हैव सेंट ऑफ एट दैट टाइम आल्सो। सो आई डोंट फील, यस इट वाज जस्टिफाइड, राइट? निकालना जरूरी था सैंचेज को, क्योंकि उसका वो स्टैब क्लियरली वो गलत था, रेड कार्ड था 45 मिनट्स के जो पहले था। यू या रिमेंबर, राइट? जो येलो कार्ड दिया था जस्ट, एंड हाँ आई जो फील इट इज, he got यस यस, या थियागो पे, यस। सो आई फील इट इज टोटली जस्टिफाइड इन माय ओपिनियन। ओके, तो बट आई थिंक पर्टिकुलरली उस चैलेंज के लिए ठीक है, मतलब आई सॉ लॉट ऑफ डिवाइड, बट हाँ ऑफ कोर्स इट वाज अ जस्टिफाइड रेड कार्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा मतलब ऑन अ वेरी रेगुलर डे इफ यू डू दैट काइंड ऑफ अ टैकल वेयर यू पुश इट इतने आगे लेवल पे, तो यू विल गेट अ कार्ड। सो आई थिंक हाँ, ऑब्वियसली बट कार्ड तो जस्टिफाइड था, बट आई मीन इफ नॉट, अगर कार्ड नहीं मिलता तो आई थिंक गेम वुड हैव डेफिनेटली गॉन टू एक्स्ट्रा टाइम एंड इट वुड हैव बीन अ वेरी क्लोज गेम फॉर श्योर। फॉर श्योर। ओके, एज योर सिटी फैन, राइट? हाँ You're a City मतलब fan. You're a City fan. So I would ask about this. It is nothing. City was a sporting वाले में क्या ही discuss करें? We knew City would win. So I would No, ask bro, about, like the game wise, I didn't feel that City will win because our back four was not there. Most of but our you had back a four was, final advantage the first yeah. leg. So, but I mean, aggregate पे तो I know like Sporting could have scored like 5 goals or 6 goals. Of course, वो तो नहीं कर सकते थे. But if you Mhm. ask that particular game, Sporting could have won that game very easily. Like because we didn't field our 11, even our like हमें reserve player में से वो reserve में से अपने वो राइट squad बैक चेंज किया था। हाँ, सो Yes. हमें वहां से भी प्लेयर निकालना पड़ा। सो आई Mhm. थिंक आवर डिफेंस वाज नॉट देयर, एंड दैट कुड हैव बीन बट स्पोर्टिंग कितने गोल मार लेती, 2 या 3, आई डोंट थिंक सो दे वुड हैव कंसीडर्ड लाइक इवन 5 गोल्स 5 goals लाइक। they would. तो
वो तो I think that was a very one-sided game. In particular, when you talk about the game, For the neutrals, they will yeah, win. for the City will win. yeah, So is City the favorites for UCL? What do you feel? ब्रो मतलब ये मेरे से तो मेरे को तो हर साल लगता है कि मतलब सिटी फेवरेट है यूसीएल जीतने के लिए वी कुड हैव अब मैं क्या बोलूं देयर वर अ लॉट Pep ऑफ overthinks sometimes. chances in the past I would say 3 to 4 years जो ऐसे हुए Hmm. you know where you know we as a fan I could say कि काफी गलत हुआ if you remember 2019 में वो स्पर्स वाला जो सीन हुआ Yes, था yes, yes. में स्टर्लिंग ने गोल मारा था एंड देन वन लॉरेंटे का हैंडबॉल हुआ था वो नहीं दिया था Hmm. बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट फिर पेप ने ओवरथिंक कर दिया थोड़ा लास्ट में स्टर्लिंग को खिला के सो लाइक हर साल देखो हम फेवरेट्स तो रहते ही हैं बट आई होप दैट एक फाइनल हारने के बाद पेप यू नो नाउ would have got more sense now you know and hopefully like you know this year could be our finally our year but I feel honestly like still Liverpool and of course Real Madrid are the favorites to win this like I would just put it out there and what Real Madrid just did we all have seen it so I would as a City fan if you ask me of course I want you know City to win. but I would totally you know favor Real to win it because of the performance they've put against PSG. You know, like that is something that no one can ever imagine. Obviously, what city is more favorite to with a Premier League title or Champions League title? Because Premier League is also going very head to head, 3 points difference if Liverpool give win that one game in Yeah, hand. yeah. So which is more likely to win? See, I feel see both are actually. I mean, it's a very good question, bro. Like uh, सिटी के गेम्स अभी प्रीमियर लीग में भी कुछ टफ बचे हुए हैं बट इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक गार्डियोला वुड of course he's going to focus on the Premier League as we all know but I think his major focus of course 5 साल से तो he's winning you know domestic titles तो हम जीत ही रहे हैं so He his made it a Farmers League. he made it into the Farmers League of Farmers course League. so I think Guardiola ka main focus would be definitely on Champions League and you know I think Champions League should be you know something because it's all about you know Guardiola ke liye it's all about taking things on priority if he thinks कि नहीं you know if he fields 11 players if he doesn't want to give rest let's say if we only focus on Premier League then we're going to win the Premier League of course but if he says कि नहीं मेरा focus for example is winning the Champions League then he might rest because you can't play on a Sunday then you again play KDB on a Tuesday night so you know like players need a bit of rest you know Rest. सारी चीजें रहती है so I think I would say that City would for City I think Champions League would be a much more bigger priority than winning the title and I think this goes with a lot of City fans also that you know even if this year we don't win a Premier League only if we win a Champions League like that is the case if we don't win the Champions League then we have to win the Premier League That's really true because Pep हमेशा CL के लिए जाएगा. We all know yeah he is trying to win it. So okay, let's come to the main match, PSG versus Real. But before starting the any discussion about that match, I will ask you: you have visited Parc des Princes, and how was the aura and that environment in Parc des Princes? I want to ask you about that. So actually, so I went there in December, and my main aim was of course to watch a Champions League game. जो I think जो मेरा बचपन से ही एक ड्रीम था एंड आई थिंक ऑल द फुटबॉल फैंस आई एम श्योर कोई भी अगर फुटबॉल फैन है उसका एक ड्रीम तो रहता है कि यू नो दे विजिट द यू नो द फेवरेट क्लब का स्टेडियम या इधर वॉच यू नो लाइक अ चैंपियंस लीग एंथम एक बार चाहे भले ही यू नो कोई छोटी टीम्स भी खेल रही हो बट चैंपियंस लीग एंथम इज यू नो द टॉप so Top thing. that was the whole idea because I initially wanted to go to you know London to watch Man City, but of course उस time COVID चल रहा था and London didn't allow you know people there. So my second best guess again was then France. So that's how this thing happened. Actually, I just got married, so मेरे को जाना था honeymoon के लिए. So I was like, okay, let's अगर हम कहीं जा रहे हैं तो that is you know that is France that we're going. France. And वहाँ पे you know and my main aim was of course to go to you know Parc des Princes मैंने पहले से फिक्सचर्स निकाल के रखे हुए थे 29th या 30th नवंबर को मेसी को बैलन डोर भी मिला था
So my Yes. aim was कि first या second को जो वो presentation ceremony होती है, where Mhm. Messi, the player Messi comes goes with that Ballon d'Or. and shows across Shows. the Yes. stadium. मेरा main aim वो था, but due to some fuck ups and flight happening की वजह से वो नहीं हो पाया था. Like, कोई Hello. Wait, wait. I think so. There is a issue. यहाँ पे प्रणय में लगता है नेटवर्क इशू हो गया रहेगा. Yes, yes. He has joined again. sorry, So yeah, it's okay. It's nothing. yeah, sorry, where was I, कहाँ तक? Park the Oh yeah. Princess पे, स्टेडियम Yeah, पे. so that's how the wish, मतलब I went there, so मेरा वही plan था कि I would at least go and watch, Messi को एक बार life में, I think सबका dream तो वो होता ही होता है. So that's how eventually got planned. I booked the ticket, and to be very honest, like मैंने इससे पहले, like I've been very much following Indian football को भी इससे पहले, since I think मैं 7th 8th standard से ही, since I live in Delhi, I used to go to, there's this stadium which was पहले जवाहरलाल नेहरू से पहले there was a small stadium in Delhi which is called Ambedkar Stadium. Yes, So bro. वहाँ पे इंडिया अपने सारे मैचेस खेलती है. So I used to go in 7th or 8th standard में भी मैं जाता था, as a little boy, and I used to see, all those things कि मतलब, and I can't, to be very honest, मैंने और भी stadiums इंडिया में देखे हैं. I've been to Mumbai Stadium, Mumbai City Stadium, Jawaharlal Nehru, but bro, like, to be very honest, it is an eye opener for me personally also, when I went to the stadium and I saw the infrastructure, और जो behind the scene जो चीजें होती हैं, which we just see the pitch, but उसके behind the scene में, when you go to the stadium, when you see एक एक चीजें, it's like that is something I have never experienced. And वो चीज जब होती है, then of course, inside the stadium I've also put a video of PSG के ultras की history के ऊपर, which I got to learn there, जो कि मेरे को पहले नहीं पता थी. एंड आई, यहाँ पे सारे लोग पीएसजी को उसी वे में लेते हैं, सिंस इट्स ऑयल मनी क्लब, और Yes, उन yes. सब चीजों पे लेके करते हैं. बट इफ यू जस्ट रिमूव द ऑयल वाला पार्ट, अगर तेल निकाल दो उसमें से, but so PSG की history itself is, a very very big like they have a very good heritage, जो उनके साथ, उनके फैंस के साथ, या जैसे वो क्लब स्टार्ट हुआ, क्या क्या चीजें हुई, उनके अल्ट्रास के ऊपर बैन हुआ. सो इट्स, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड, एंड आई एम सेइंग, इफ यू इवन इफ यू सर्च, PSG का stadium is one of the most loudest stadium in the world. Like, it is one of the lousiest places that you can go in the world. So ये एक चीज है. I mean, of course, Bernabeu, Camp Nou भी है उन लिस्ट में. So I have never experienced, वो एक डेसिमल होता है ना, कि Yes, इतना yes. तेज शोर भी कहीं पे हो सकता है. Like it's like इतने बड़े स्पीकर के सामने आप खड़े हो, एंड उसमें से कांस्टेंट आवाज निकल रही है, एंड जस्ट देयर. So it was amazing, man. Like, it was an eye opener for me personally. It's a very good stadium. We all know, and what sound it makes. And then जब Leo Messi, you ever remember? Leo Messi, they do it like that. And you Yeah. also did a C वाला celebration किए थे आप वहाँ पे. What Bro. was the reason of that? What was the reason of that? So nothing, bro. Like, so I was just, मैं वहाँ पे pitch के सामने था, and there were few kids, who were Hmm. doing C. So I was like, okay, let's just, just वो pitch, वो उसको निकाल के, people were doing some celebrations, like Lewandowski का celebration. I was like, okay, let's record ही करना है, कोई देख नहीं रहा, तो चलो उसको कर लेते हैं. That's pretty much it. ऐसा कोई particular reason नहीं है. I mean, for me, of course, like, a lot of people do ask me कि भाई Messi or Ronaldo. For me, I honestly see both at, at the same level. I don't even differentiate one of the guys on top of them. Like, दोनों are at the very pinnacle, and we should all be grateful कि हम लोग
उनके एरा में है, you know, like that should be that is something that I feel. But honestly, like if you ask me, like personally, मेरे लिए तो एक ही रीजन था फुटबॉल स्टार्ट करने का, that was Ronaldinho. Is वेट it gone again? Okay. एक सेकंड बस, एक सेकंड। तो OBS से स्ट्रीम कर रहा है क्या? नहीं, स्ट्रीम ऐड से कर रहा हूँ। अच्छा इट हैपेंस विद माय कैमरा कभी-कभी। अच्छा अच्छा। अब ठीक है, अब ठीक है। ओके, ओके, यू Yeah. कंटिन्यू। Yeah. So of course I started watching it for someone asked me like Messi or Ronaldo, like दोनों same level पे ही हैं. But personally, if you ask me, I think Ronaldinho was the reason I started watching football. So उससे I don't think कि उनसे ऊपर कोई है, Ronaldinho से ऊपर कोई है. Obviously, Messi and Ronaldo दोनों अच्छे हैं, they get criticized. We saw how much we criticize them. Ronaldo को criticism मिल रहा था बहुत दिन तक, and we saw what he can do. In his Yesterday was performance, he amazing, showed bro. yesterday. His Yeah. hat-trick showed he मतलब सबको चुप करवा दिया कल के हैट्रिक के बाद सारे क्रिटिसिज्म को। दैट एज डजंट मैटर, दे हैव 15 इयर्स, इट्स अ गॉड डैम थिंग। दोनों उसी लेवल पे है, एंड मेरे लिए भी Don't दोनों बहुत इससे आगे कोई राइवलरी भी कोई यू नो ऐसी बन जनरेट हो पाएगी. सकती है। I don't see any rivalry can ever match Messi versus Ronaldo rivalry. I know there's Mbappe, Haaland debate, Phil Foden debate. I mean, they're greats too. Maybe आज से हम 3 साल बाद उनके बारे में बात कर रहे होंगे. But again, जैसे एक होता है ना कि दिल में एक चीज है जो वो तो तुम नहीं निकाल सकते हो मेसी रोनाल्डो के. ऑब्वियसली, Messi couldn't have been bigger without Ronaldo, and Ronaldo couldn't have been bigger without Messi. तो दोनों दे एक पुश दूसरे ईच के अदर। लिए, हाँ, जोकर और बैटमैन वाला सीन है थोड़ा दोनों का. यस, यस। Okay, let's come to the match. What actually went wrong for PSG? क्योंकि we saw first leg they played very well, very well. They played in the They first leg. played both games very well. They Yes, played both games very well. in the second leg also till 45 minutes, till 60 minutes, I will say they were playing good actually. लेकिन मैं Yeah. देखता हूँ लीग वन के मैच, बिकॉज आई एम अ मेसी फैन। आई लव मेसी बट आई ऑल्सो रिस्पेक्ट रोनाल्डो। मैं लीग वन के मैचेस देखता हूँ। पीएसजी इज वेरी इनकंसिस्टेंट, बट दोनों लेग में बहुत अच्छी थी। तो व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब वो 40 मिनट का जो फेस था, व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग फॉर पीएसजी अगेंस्ट रियल मैड्रिड? ब्रो, इसका आंसर तो हम सब जानते ही हैं. बेंजेमा वेंट रॉन्ग फॉर पीएसजी. व्हेन बिग बेन शोड अप, जब एक बार बड़े वो आते हैं तो भाई फिर तो लाइक सलाम ठोकना पड़ता है सबको. बट सी, आई डोंट ब्लेम पीएसजी एंटायरली बिकॉज like one of my friends says this कि एक and he has been right for a very long time. जो एक बड़ी टीम होती है ना, वो एक बड़ी टीम ही होती है एट द एंड ऑफ द डे. बिकॉज उनको उस प्रेशर में, उस एनवायरमेंट में, उस सिचुएशन में खेलने की आदत होती है. And this is, I would just put this very blatantly in front of you, saying वो चीज I don't feel even is there in any other club. In City also, if you see, like I have never seen City coming back from, let's say, 2 goals. यस, बड़ी टीम यस। से तो छोड़ो, क्रिस्टल पैलेस भी अगर 2 गोल मार देती है फर्स्ट हाफ में, देन सिटी लूजेस दैट गेम. बट हाँ, अगर सिटी पहला गोल मार देती है, देन इट कैन गो देन अप टू सिटी विल 5 विन। 8 goals. But put it any other team in the world, City, I would say, is, I think we all can agree, is the best team right now in the world. Best manager, best players, KDB, वगैरह. But I don't think so. They, even if PSG would have made them 2-0 down, they would have come back and scored 3 goals. So एक so that's what I would just put this on the go, कि एक बड़ी टीम जो होती है वो एक बड़ी टीम ही होती है, और एक कॉन्फिडेंस होता है ना अंदर. जैसे लुइस एनरिक का जब यस, टूर्नामेंट आना हुआ था विल कि if विल स्कोर 6 गोल्स, हाँ, if इफ they दे स्कोर score 5 they score 6. 6। तो मतलब what a, I don't see कि उससे coldest statement कभी हिस्ट्री में कभी बोला जाएगा भी या नहीं जाएगा. So that confidence is something that you see in Real Madrid. So वो एक, I think, बड़ी टीम एक big team factor रहता है. यस, यस। यू कंटिन्यू, 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 वो होता रहता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा. Yeah, ये so मेरा कैमरा दिख रहा है? नहीं, तेरा कैमरा नहीं दिख रहा मेरे को. ये ना अभी दिख Yeah, रहा होगा। it's back on. Yeah, अरे! it's gone now. कोई नहीं, चल तू कर ले, कोई इशू नहीं है. यस, नाउ कंटिन्यू। Yeah. कहाँ पे थे हम लोग? So that's अ, मतलब,
Yeah. यस। सो यस, ये चीज़ तो मैंने भी बोला था कि सिटी भी अगर कोई और टीम भी रहती ना पीएसजी के अगेंस्ट, दे कुड हैव वॉन अगेंस्ट पीएसजी। मतलब सिटी भी रहती तो नहीं जीत पाती थी। Yeah. एंड एज आई एम बारसा फैन, मेरी इटर्नल राइवल है रियल मैड्रिड, बट आई एक्सेप्ट कि रियल जैसी टीम ही ये सब कर सकती है बिकॉज दे हैव वॉन फकिंग 13 यूसीएल्स। ऐसा कोई नहीं कर सकता है, राइट? मतलब 13 यूसीएल एंड जीतना एक सबसे बहुत। ज्यादा तो थ्री थ्री पीट ब्रो, लाइक आई डोंट थिंक सो। लाइक हम लोग इससे पहले सिर्फ यू नो हिस्ट्री में देखते थे कि भाई 1980 में, 1970 में नॉटिंघम फॉरेस्ट या इन टीम्स ने दे वन कंटिन्यूअसली यस, वन और यस, टू। यस। बट टू एक्सपीरियंस, लाइक व्हाट आई सेड कि मतलब टू एक्सपीरियंस दैट एंड सी कि भाई मतलब कोई टीम इतना ज्यादा डोमिनेट कर सकती है, वाज लाइक वी शुड ऑल बी ग्रेटफुल आल्सो फॉर दैट। आई मीन ऑफ कोर्स बार्सिलोना फैंस के लिए तो वो चीज नहीं है बिकॉज ऑफ द टाइम थोड़ा स्लाइड हुआ है, यस, बट स्लाइड हुआ है। to live in that and see that dominance is also is something we all can agree to that. यस, वी कैन ऑल। डू यू फील लिवरपूल रहती तो कर सकती थी? It's an interesting question, bro, but I think so, yes, man. I think so, yes. आई ऑल्सो They थिंक did it. Yeah, I think so. They did it against Roma also. दे डिड अगेन बारसा ऑल्सो। They did against Barca also. I think Liverpool is that kind of a team, man. Like थोड़ा उनके अंदर Real Madrid, and again it comes from the team's legacy. और Klopp थोड़ा सा लुई एनरिक जैसा लगता भी है कि मतलब he's very aggressive when he sees that कोई अच्छा प्लेयर भी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, जैसे कल साला साला को भी there is one video that came out where पास के लिए Salah चिल्ला रहा था। was not passing, so Klopp was like like he's always he always wants to win, and he always wants to like perfect हर चीज एकदम perfect होनी चाहिए. So I think if Liverpool would have been there, I think they would have done the same. But I think मेरे से personally पूछ तो I want a Real Madrid Liverpool game अभी आगे वाले UCL में, man. Like it will be the most cracking game that we can ever witness, because both teams are you know are just at the same energy, man. Even it could be a final, but I hope it's not final because I wish City to win it. But Real Madrid Liverpool would be a good game, so watch out for that. यस, इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर गेम। सो पीएसजी का इतना डिजास्टरस सीरीज गया, सीजन गया, कोप डे फ्रांस भी वो लोग हारे थे, एंड इवन नाउ पीएसजी निकल गई। तो इज पोस्टेटिनो टू ब्लेम फॉर एवरीथिंग, और इट्स देयर मैनेजमेंट, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू ब्लेम? लाइक लियोनार्डो, इन सबको ब्लेम करना चाहिए, किसको ब्लेम होना चाहिए? uh, Bro, Poch ka bhi, see, Poch is a good manager. We all have seen what he has done. Uh, Bro, I don't know a specific opinion for this. Kyunki I feel with PSG, I just feel there's more attitude problem with the team. ईगो प्रॉब्लम। Like that, as a outsider, not just Leo, yeah, like ईगो, ईगो, like ego. Yeah, I mean ego. ईगो। You can say कि yeah, I just feel there's a bit of attitude का थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि players don't I like when you see Liverpool, Madrid, Man City, like all of the players look very gelled up when when you see them on the pitch. But in PSG, I don't. When I see the team, I don't really feel it. Like Neymar, Messi का अलग bromance चल रहा होता है, but Mbappe is on the sides. Then Mbappe का अलग से कुछ situation चल रहा है life में उसका अलग. No matter like एक on this is entirely on his individual brilliance कि उसने 2 गोल मारे, and also he won the I think he won the penalty also. यस, Uh, यस। so I just feel it's that. And to be very honest, I think आगे भी I don't see PSG in a very real contention, क्योंकि they had the best, I would say this, of course, they had the best manager जिससे उन्होंने replace किया, which is Tuchel. And they fired Tuchel not because of performance, but because he was not able to handle this द personal ईगोज। things of he gave a statement also कि like PSG is not the right club to manage. I don't want to manage Neymar का situation. Individually एक एक player को कोई manager इतना manage नहीं कर सकता. So maybe it's that, maybe it could be anything else. The only I think manager that can probably save PSG is I think Mourinho जैसा player आ जाए कि भाई मैं हूँ और बाकी कोई नहीं है यहाँ पे. There's only one Don which can be Mourinho. So I don't know in future it could happen.
But I just feel for as a third person when I see the pitch, I think it's majorly because of attitude. I don't feel the right attitude in PSG players. No offense to any other player in particular. अगर Yes. किसी को ऐसा लग रहा हो कि भाई मेसी के ईगो के ऊपर पे बात कर रहा है, नेमार के ईगो पे बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. I just feel like they don't I don't see them as a complete team. सिंक अप अच्छा नहीं है, मतलब यहाँ पे एक हाँ. जन ने हमको कमेंट भी किया है, पीएसजी विल नेवर विन द यूसीएल। उनका सिंक अप अच्छा नहीं है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत इश्यूज है। वी नेवर सी मेसी टू स्क्रीम, मतलब मेसी को मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, वी नेवर सी मेसी टू स्क्रीम इन द पिच। बट उस दिन हमने देखा मेसी ने वराटी को चिल्लाया कि भाई पास दे दे। वी नेवर सी मेसी टू स्क्रीम, ही इज अ वेरी हम्बल, शांत रहता है, खेलता है, बट ही स्क्रीम। दिस शोज देयर इज अ बिग 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 इश्यूज इन पीएसजी मेरे हिसाब से। एंड सी जिदान काम करेगा पीएसजी में। Bro, Zidane would be a good pick, I feel. But I think Zidane or Mourinho, I feel, are could be the right. You need, like Pochettino also, I don't feel, is not a very strong, like as a character wise, like as a tactician wise, or, everything he's amazing, bro. Like what he, Spurs को अगर कोई बंदा UCL फाइनल लेके जाए तो मतलब तुम उसका लेवल जानते हो. But I यस don't, यस sometimes you just need a character. Sometimes you just need a character in the team. So I think I just personally feel I think Zidane would be good, but I think Mourinho would be even better for PSG just because of his character. यस ही विल, मतलब वो बिठा सकता है प्लेयर्स को, ही कैन शट अप द ईगोज, राइट। Yeah. आई डोंट नो व्हाई इज दिस इशू, वेट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एटलेटिको जो होने वाला है। व्हाट डू यू फील इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड? मतलब दे आर वेरी इनकंसिस्टेंट इन द होल सीजन एक्सेप्ट द लास्ट मैच, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम? See, for United, I feel personally कि not attitude, not anything. It is just purely like they've just got, मतलब उनका तो मतलब ऐसा नहीं कि आज का प्रॉब्लम है. उनके तो ओवर द ईयर्स से ही इट्स ऑन अ वेरी मैसिव डिक्लाइन in terms of transfers, in terms of players, in terms of like उनका सोल ही नहीं है कुछ की, मतलब वो क्या किस टाइप का फुटबॉल खेलते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता. A new manager comes and whatever the style he says वही चलने लग जाता है. you know so United का, but I think Ralph के आने से I somehow feel that of course he has थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो दिखा है. Even United are losing the games, but they are playing very good football. Like I think recently से 2 गेम भी जो वो हारे, it is यस just यस because of few individual mistakes, not because of the team mistakes. Team was playing well. They had better chances than the opposite teams. More one on, like ऐसे one on ones भी ऐसे chances जो maybe if they get a good striker, I mean of course Ronaldo is there, but let's say a young striker, जैसे अब ग्रीनवुड की बात नहीं कर सकता, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो आई फील यू नो कैन somehow revive. तो स्ट्रक्चर वाइज आई थिंक रैल्फ इज डूइंग अ गुड जॉब, बट आई थिंक यूनाइटेड एथलेटिको वुड बी अ वेरी वेरी गुड गेम, क्योंकि सिंस अगेन वी हैव सीन अभी वाले गेम में भी स्पर्स वर्सेस यूनाइटेड वाले गेम में भी व्हाट वी सॉ, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है टीम के अंदर. सो आई फील इट विल बी अ वेरी close one for sure. यस इट विल बी अ क्लोज वन। वी समवन हैज कमेंटेड आल्सो कि मैटिच को खिलाना एक बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब कल मैटिच खेला, वी सॉ व्हाट अ सीडीएम कैन ब्रिंग, ही ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ फ्रेड। तो इज द डीएम द मेन प्रॉब्लम ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड? क्योंकि कल फ्रेड अच्छा खेला, फ्रेड गिव 3 की पासेस इन द होल गेम एंड रोनाल्डो भी अपने आप अच्छा खेलने लगा, तो इज दैट द मेन इशू? Bro, like I mentioned, I don't see कि कोई एक चीज in particular is the problem for United. Uh, it's not just a CDM, or it is not just, let's say, even a lot of people are just saying कि भाई it's the problem of Harry Maguire not playing well. ऐसा कुछ हैरी नहीं है. I मैगवायर know. प्लेड वेल यस्टरडे। I ओन mean, गोल को हटा दे तो, ओन गोल को हटा दे तो। I would still not agree to that, but still मतलब मैं कहूँगा कि you know again structure आ जाएगा तो I think United will be back again, like they'll be good. और अभी as you already know,
आई थिंक 7 और 8 प्लेयर्स के तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही रिन्यू अभी यूनाइटेड नहीं कर रही, लाइक पॉगबा का एक हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वर्किंग आउट। तो एक वो चीज भी हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट Ronaldo is 37, Cavani is I think 35, 36. So age is also a big problem. Matic is also I think more than 33, 34 I guess. So वो भी Yes. एक देखना पड़ेगा. I guess this camera is okay. Yeah. कैसा वाला zoom हो गया है? हाँ थोड़ा सा zoom out करना पड़ेगा, कोई नहीं. ठीक है? Yeah. I hope it's good now. Yes, you Yeah. are right actually. ठीक है. हैरी मैग्वायर के बारे में, मतलब हैरी मैग्वायर हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट, बहुत सारा गोल्स कंसीड करने के लिए यूनाइटेड का हैरी मैग्वायर कंट्रीब्यूशन बहुत होता है. So what do you feel about that player? He should be stripped out of his armband. Of course bro. इसमें कोई डाउट नहीं है. मतलब हैरी मैग्वायर क्यों ही कैप्टन है यार. Yeah, मतलब of course. बट मेरे को और कोई कंटेंडर भी नहीं लगता यार. आई मीन डेविड डी गीया को कैप्टन बना सकते हैं, बट आई डोंट सी एनी. आई थिंक ब्रूनो, पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई थिंक ब्रूनो वुड बी, ब्रूनो के अंदर थोड़ा सा वो लगता है लीडरशिप क्वालिटी, बट बेचारा बड़े भैया के इन्फ्लुएंस में थोड़ा नहीं कर पाता, अपनी दादागिरी नहीं चला पाता. ये तो है. मतलब हाँ, ब्रूनो कर सकते हैं, इवन डेविड डे गया. एक ने कमेंट भी किया, द मेन इशू इज द बोर्ड. आप Yeah bro, इसके बारे में and क्या I think बोला? and of course the owners also are an issue for that. So वही मैंने बोला कि यूनाइटेड इज नॉट जस्ट वन प्रॉब्लम, दे आर लाइक वो एक पूरा एक गुच्छा ही है विद, मतलब पूरा जितना उसको और अनटैंगल करोगे उतने ज्यादा और प्रॉब्लम्स उसमें से निकल के आएंगे. लेकिन राल्फ के अंडर एक चीज है कि बहुत डायरेक्ट खेलने लगी यूनाइटेड. वी सॉ, जैसा आपने भी बोला कि हाँ, यूनाइटेड का गेम दिख रहा है, कुछ तो है. मतलब वी आर सीइंग देयर इज सम थिंग्स ऑफ इंप्रूवमेंट इज देयर. दे आर आल्सो प्लेइंग गुड. इंडिविजुअल मिस्टेक्स की वजह से दे कंसीड द गोल. फॉर एग्जांपल हैरी मैग्वायर इज द मोस्ट इंडिविजुअल मिस्टेक मेरे ख्याल से. एंड सो हु वुड यू स्टार्ट इन द मिडफील्ड ऑफ यूनाइटेड अगेंस्ट एटलेटिको? In the midfield, if you ask, I think, yeah, I am a very what do you say, मैं इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि if there is one experiment who has been successful, then उसको छेड़ो मत. So I feel जो स्पर्स वाली टीम थी, वही टीम ही खिलानी चाहिए फॉर द एथलेटिको गेम, बिकॉज ऐसे अगर तुम कोई एक ऐसा गेम जीत के जा रहे हो, लाइक अ वेरी हाई हाई एंड थ्रिलिंग टाइप का गेम, व्हेन इट ऑल कम्स डाउन बॉइल्स डाउन टू, मतलब इट कम्स डाउन टू एवरीथिंग टू दैट, इतना ज्यादा मार्जिनल कॉल पे तुम अगर एक गेम जीत के जा रहे हो और उस गेम को तुम जीत रहे हो, तो आई डोंट, जो उन प्लेयर्स को ही तुम आगे कंटिन्यू तुम्हें करना चाहिए. बट आई थिंक ब्रूनो विल बी अगेन बैक. So we need to check. I don't know if he'll be back. I think he's sick or something right now. Yes, he So is sick, when he is he'll be back, he's sick. So I think Bruno might, if Bruno comes in, that will be a very good addition. But I think personally feel कि Spurs वाली team को भी they should play just because of the high energy that they bring अभी वाले game को जीतने के बाद. Yes, I too also feel कि मैटिस का स्टार्ट करना बहुत जरूरी होगा गेम में, because he made life easy for everyone. Fred, Pogba, डिफेंसिव ड्यूटीज हटा दिए थे. मैटिस का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मेन थिंग. एंड व्हाट विल बी योर प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच? So yeah, I personally feel if Atletico win this, then I mean, of course they will be favorites too. I will not say favorites, but they should win this. But like realistically, if you ask me, I think Atletico might win this realistically. But I somewhere in my heart that I want ki आगे Mr. Champions League should play, so I would say ki United should probably win it. But I honestly feel, matlab, if you ask me on a realistically, I think Atletico will probably win this. Atletico will win this, I somehow feel. But the draw is favoring United because yes, they played poorly in the first leg, but 1-1 निकाल लिया था United ने. Somehow the draw is favoring United. We know Atletico has also been poor. But this season we thought they would be the favorites to win La Liga. They brought new signings, they have spent the money, but still they are playing very poorly throughout the season. Atletico is playing very, very poorly right now. But I think, of course, it's gonna be a very close one. मतलब दोनों टीम्स ही बुरा खेल रही हैं इस समय. Just कि उस दिन पे कौन ज्यादा बुरा खेलेगा वो हार जाएगा.
दोनों शिट है एंड दे आर प्लेइंग कौन ज्यादा कम हगेगा वो निकल जाएगा. So what will the score be for the match? United one. Score for the match, I think it's gonna be 1-1. I think score will be 1-1, but again, Atletico will have an aggregate, so I think Atletico will advance to that. But if you ask me, I think personally, I think it will be a draw. The game should be a draw because Atletico will defend their lead for sure. They might try to score one, they might concede one, but I think 1-1 is something that I predict, for this game. Okay, okay. Let's go to the next match. Villarreal versus Juventus. It was also aggregate 1-1. And I personally feel Villarreal can win this tie because I see La Liga and Villarreal अच्छी team है. I feel Villarreal can win this tie. I want to know your insights about this match, also the scoreline and who will win. Uh, I haven't watched like मैंने ऐसा personally like to be very honest मैंने इतना देखा नहीं है विलारियल को खेलते हुए. Also I think was in uh, like I didn't watch the Juventus Villarreal game to be very honest, but I think if you ask me I think Juventus should advance it because मैंने एक दो games Juventus के इससे पहले group stage में देखे थे, so I think Juventus should win it. But again like if it's 1-1, if you're saying कि Villarreal are playing very well, then you know. Answer. Yeah, they might put an upset, but I think Juventus will edge it. I just feel somehow that Juventus will edge it. I have a question for you. Is Allegri's tactics are too old for modern football? uh no bro, like I don't think so it's too old. Don't think so it's too old, because even I think last time he also won the Serie A title, I think 2019. Yeah, abhi recently with जो last Recently, जो उसने Juventus Juventus के सारी साथ ही won. Yeah, so he has won it. I don't think so it's too old, but again उसका वो मोरिनो वाला हाल ना हो जाए ना कि कि जो मतलब मोरिनो का अभी भी 2004 या 2009 में ही ना उसी एरा में ही ना रुक जाए. So I just feel like ठीक है. If you're saying मतलब I will definitely watch this game as well. Personally, like I didn't watch it, so being very straight away, I मैं didn't उसके watch साथ the से game. So, ये वाला but मैच yeah, I thought Chelsea will win from Lille. I would ask about Chelsea versus Lille as well. Chelsea शायद जीत जाएगी because they had a 2-0 lead, 2-0 advantage. yeah, But this, Lille was also decent in that first leg. yeah, I think Chelsea for me, Chelsea is the favorite, dude. Chelsea will win it anyways. Like, कांटे will drive the bus क्योंकि sanction हो रखा है. कांटे drive करके लेके जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन Chelsea will win it, yeah, for sure. And Ajax versus Benfica. Ajax versus Benfica, the final game. उसका aggregate कितना रहा था Ajax versus Benfica 2-2, का? 2-2, 2-2. 2-2. I think Haller right now is in the form of his life. So उसको देखना रहेगा यार. मतलब I think and he just edged it, like Lewandowski just edged him for the golden boot race के लिए. So I think it's gonna be a close one, bro. Like even if you're saying malab 2-2, I think it's gonna be a very close one. And but I somehow feel I'll put my bets on Ajax just because Haller की form is just too incredible, bro. मैंने उसके group stages के matches देखे थे और उसने जो goal मारे हैं, bro. Like that's amazing. Like that's amazing. And even उनका like I think Ajax are the most underdogs in this competition right now as we speak. Like they are the most underdog team, and but they will be the silent killer for sure. Like I feel like they might go up to till top four. आगे तक. Like they have. That's what I feel. They can. As you're a City fan, आपको तो अच्छा लगेगा positional play football, मतलब position रखना. Ajax play that. I also a Barca fan, love to see Ajax. Ajax plays beautiful football. And मेरे हिसाब से Ajax qualify जाएगी. Prediction भी यही है. Ajax will win. I have a good round for you, a rapid fire round. I will ask some questions and rapid fire, जल्दी जल्दी answer देना. So, are you ready? I will start. Yeah, done. Let's go, Fernandinho or Rodri? bro. That's amazing, yeah. Fernandinho or Rodri, bro. I think Fernandinho, what over the years he has done is incredible.
Right now, as we speak, Rodri, of course, but Fernandinho at his peak. अभी के टाइम में like see overall if you ask overall में तो I think Fernandinho man, Rodri को भी आए हुए दो तीन सीजन ही तो हुए हैं अभी. If he continues that form, then I would say, I mean, for Rodri has actually brought a lot of balance in City, bro. Like he is the missing piece of the entire entire structure. अगर उसको मतलब I have seen few games जिसमें Rodri नहीं खेला है and City were not gelled up like that. I mean, of course, Fernandinho is the perfect replacement for him as we have it on the bench. But I think Fernandinho overall, like because he has done it over the years and इतने बड़े क्लब में इतने टाइम के लिए रहना, जहाँ पे तुम यूं सेकंड से अपनी पोजीशन गंवा सकते हो. What Fernandinho has done is just incredible. लेकिन as right now, if you ask me, I think Rodri is a gem of a player. Like he's a very rare find. He's actually boosted. I don't know how Guardiola landed him, man. Like I just don't know how he did it. So वही कह सकते हैं ना, जैसे बुस्केट्स था 2000 उस समय 2009-10 क्लब के टीम में बुस्केट वाज द मेन प्लेमेकर, डी लाइन प्लेमेकर जो सही था. The missing puzzle, right? Okay, let's go to the next question. Benzema or Raul? ओ कहाँ से लाया भाई, तो ये कहाँ से ढूंढे इन्होंने क्वेश्चंस. भाई see, I don't know, a lot of people will try to इस चीज को उसमें ले लेंगे कि भाई see, I have seen El Clasico, like I've been watching football since 7-8 2006-7 से मैं देख रहा हूँ football. Like I used to actually wake up to watch Ronaldinho रात के 1:30 बजे ला लीगा में, no matter कोई भी मैच चल रहा होता था मैं देखता था. If you even search, Raul at his peak was amazing, and I would say कि Benzema is just the mirror image of Raul. Like Raul का जो era था ना, Benzema is just a mirror image to that of how good Raul was in in Real Madrid. Of course, हमें वो तो हमें पता ही है कि Real Madrid अपने club legends के साथ क्या करता है. लेकिन I think Benzema right now, I would say Benzema, because I watched him more. I watched him more, not because any disrespect to Raul, but I think I've watched him more, so that's why I would go with Benzema. But I think Raul though is again legend, bro. Raul और गुटी, ये दो प्लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन था ना ब्रो 2000 I think 6, 7, 8 रियल मैड्रिड के लिए, it was आज के टाइम में इट यू कैन कंपेयर इट टू एनी ऑफ द डेडलीस्ट ट्रियो. मतलब ऐसा कोई इस डुओ के बारे में कोई बात नहीं करता. गुटी राहुल का जो कॉम्बिनेशन था, nobody talks about that, but it was like I have seen few matches and even if you search few games, like it was just amazing. गुटी तो ऐसे पास निकालता था जो मतलब केविन डी ब्रुयना भी ना निकाल पाए. Like it's a very big statement that I'm saying, बट गुटी ऐसे पासेस निकालता था जो केडीबी आज के जमाने में भी, जिसको हम सब देखते ना कहते हैं भाई यार ये तो सिर्फ केडीबी ही कर सकता है. जो गुटी कर सकता था वो केडीबी नहीं कर सकता. लाइक जो केडीबी कर सकता है वो गुटी तो कर ही सकता है. सही. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एनफील्ड और सैंटियागो बर्नाब्यू? होम क्राउड के मामले में मतलब क्या, मतलब किस स्टेडियम के मामले में, बस कौन सा अच्छा स्टेडियम है, एनफील्ड या सैंटियागो बर्नाब्यू? अच्छा, आई मीन दैट आई थिंक क्राउड यार. व्हाट आई हैव सीन, मतलब हमने तो सिर्फ पढ़ ही सकते हैं और जो वीडियोस देख सकते हैं. आई थिंक एनफील्ड आई वुड थोड़ा सा एज, बट recently what we saw with Real Madrid Ultrasur, dude, that is just a different वो तो अलग का shit है bro. Like so and but I don't know man, like ये तो काफी tricky question है. But I would just say कि थोड़ा सा I'm थोड़ा सा lean towards Anfield. मेरे दिमाग में ना एक इसका रीजन है, मैं बस उसका रीजन क्लैरिफाई कर देता हूँ. मेरे दिमाग में ना एक इमेज छपी हुई है एनफील्ड को लेके. जब सिटी आई थिंक 2019 में
चैंपियंस लीग में ट्रैवल कर रही थी टू एनफील्ड. So the welcome that they got, it was there's a video where it's all red, like everything is just red, like सिटी की बस तो सिटी की पूरी बस को उन्होंने लाल कर दिया था. And it pura, it was just flares, red flares everywhere. There's this one video, dude, like just watch, like Champions League game 2019 City Liverpool, and like City is coming to play at Anfield, और जो उसके बाहर का जो एटमॉस्फेयर था ना ब्रो, लाइक दैट, वो दिमाग ना मेरे में छपी हुई है, मतलब एकदम बहुत ही गलत लेवल से. तो दैट्स द ओनली रीजन आई वुड से एनफील्ड, बिकॉज आई लिटरली आई एम स्केयर्ड ऑफ I don't want City to play there. Okay, I want to ask you this: which of these players will leave or stay during in this summer transfer window? What will happen? Will they leave or will they stay? Rudiger. हाँ, he's gonna leave. उसने तो स्टेटमेंट दे ही दिया. अच्छा, बट आई थिंक अभी चेल्सी का सिचुएशन हो गया ना, तो वो मेरे को नहीं पता. बट आई थिंक पर्सनली आई थिंक रुडिगर विल लीव, मैन. ही विल लीव. Declan Rice. I think he's gonna stay. I think based on results of West Ham, I think he's gonna stay. Okay. Hazard. Eden Hazard. Again, ये भी वही वाली चीज है कि he might come back to Chelsea, but अगर Chelsea पे sanction रहेगा तो वो नहीं आ पाएगा. So I don't know, but I think he's gonna leave. I think he'll leave. Maybe on a loan, but I think he'll leave. Fernandinho, I think he'll leave back to Brazil, yaar. He's saying that he wants to stay. He has more gas left inside him. Yeah, he's saying, but I think, I think he's gonna leave. He'll play back to his boyhood club in Brazil somewhere. I think that's what I feel. South Americans player usually go back, to their, so that's the only thing I can see. Yeah. Chouameni. Huh? Chouameni. अरे AS Monaco का जो player. Chouameni. I can't hear you, man. Like क्या? Chouameni. अच्छा, I think a lot of clubs are after him. अगर मैं अभी transfer news पढ़ लूँ तो I think then he's gonna leave, man. If he gets a good offer, then he might leave. Take a second. Yeah. My voice is audible, right? Yeah, your voice थोड़ी सी धीमी आ रही है, but it's fine. Yeah. वो धीरे आ रही है. अभी ठीक है? अभी ठीक है. Okay. Tuchel या Jurgen Klopp? Hello. Tuchel या Jurgen Klopp? क्या? Tuchel या Klopp? Bro, you're थोड़ा सा lag, मतलब कुछ. I think your screen is frozen. Okay. Hello. अब ठीक है? Yeah. ठीक है. हाँ, अभी ठीक है. मतलब बीच में एकदम स्टक सी हो रही है. हाँ. Okay. Tuchel या और Jurgen Klopp? Bro, भाई एक I can't answer. I refuse to answer that. I refuse to answer that. Guardiola, I will say, bro. Guardiola. Okay. If you weren't a City fan, then which club you would have chosen? If not City. Yes. Like I've been a Barca fan, dude. Like since just because of Ronaldinho. Like in La Liga, I've been always a cooler just because of Ronaldinho, man. I think उससे ऊपर मैं और प्रतीक have a lot. हमारे दिन हर चीज इस बारे में डिबेट होता है. If you have your friends, if you have a brother, और वो किसी दूसरे क्लब को सपोर्ट करता है तो एक डिबेट हमेशा रहता है घर पे. So मेरे लिए वो रोनाल्डिनियो है, because he has won it all, and that's the only reason I'm more, that's why I still like Barcelona a lot, but City is the one true love for me. But I mean, if like I equally support Barcelona as well, like just because, and I think Indian football fans का problem भी यही है कि we don't,
हम बार्सिलोना या कैटलोनिया या फिर मैड्रिड में पैदा नहीं हुए कि हम उस चीज को जस्टिफाई कर पाए. वी जस्ट सी इट फ्रॉम एन आउटसाइडर एंड वी सी कि हाँ क्या चीज ऐसी अच्छी है जिसको यू कैन रिलेट टू पर्सनली. So that's the only reason. I mean, if not City, then I would have been supporting Barcelona. Yeah. KDB और डेविड सिल्वा? Bro, David Silva, bro. David Silva. El Mago, for sure. The magician. Magician. He was a class apart. He's still a class. Sociedad where we can see he's playing very good. Next the question: Wayne Rooney or Aguero? Aguero, no doubt. Now since he's retired, we all know. But I think Rooney was, of course, when I was watching football, Rooney was, मेरा फटता था मतलब रूनी को देख के when he used to play against City और he used to play जो attitude उसके अंदर था. I don't think so any player के अंदर वैसा टाइप. I don't think so रूनी जैसा कोई player आएगा. And same with Aguero. But as a City fan and what Aguero has, I've always admired Aguero, so I would prefer Aguero. In his young age, Wayne Rooney अलग gravy था actually. बहुत ही अलग gravy था. Young age में अच्छा कोई. Name one player you will replace from the current City team from the 2011-12 City team. The 2011-12 जो Yaya Toure. City team. What? Yeah, I want to bring back Yaya Toure. Yaya Toure and what? Yaya Toure and company. And who will you replace? Like I want. Who to replace with is I think I will replace Yaya Toure with Rodri because of course Yaya Toure is a beast, man, fucking beast. No one could surpass him. Like he was like a Van Dijk ka bhi 10x at his peak. Like people rate Van Dijk right now, but if you would have watched Yaya Toure in 2011 or उससे पहले types of Barcelona, जब Barcelona जीती तो 9-10 वाला. हाँ, like he was a beast, man. Yaya Toure was a beast. So Yaya Toure and company, of course, dude. Like company तो मेरा अभी अगर realistically पूछो तो अभी तो सिटी के पास स्ट्राइकर है ही नहीं, तो अग्वेरो भी मेरे को चाहिए होगा. लेकिन company, man, the one player that I would want is company. When he retired, we had a lot of problem until Laporte. Huh? Yeah. किससे replace करोगे? The captain. I think either Diaz से कर सकते हैं, just because only on the basis of leadership. Like company brings that leadership inside the team. On the skill level, I think both are at the same. There's no comparison between the two. That's right. जब company गया था कि City problems faced a lot. There was no leader in the team, man. We didn't have any leader until unless कि मतलब फिर we got जो एक player जो सबसे was the key signing of Guardiola was Diaz. So जब वो आया Diaz आया तो उसके बाद everything वो structure पीछे का ठीक हुआ. But I think हाँ stable हुआ थोड़ा. So yeah. Pep in Barcelona time या Pep in City time? I mean, of course, man. Like what Pep did with Barcelona is वो सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है यार. मतलब Champions League, another level. And like if Guardiola wins Champions League with City, then I would then say Guardiola with City. But right now, of course, since he has the Champions League and all those titles, I think Club World Cup also with Barcelona, then I would say, Barcelona. Pep with Barcelona had far more achievements than Pep with City just because of that Champions League difference. This is the last question. I think बहुत परेशान हो रहे हैं इस ये वाला राउंड से. नहीं bro, like this is amazing यार. मतलब I can see for me, I always want to speak to people who love football. That's the reason. अगर मैं football से ही परेशान होता, that's the reason I can't post. No, I'm telling you this question. Like
Okay, let's come to the next हाँ question. Who is more likely to win the Ballon d'Or? Haaland या Mbappe? एम्बापे पहला कौन जीतेगा? हालैंड या एम्बापे Mbappe? एम्बापे Okay. ब्रो एम्बापे don't see any he's the best player right now in the world. No one can compete with him right now. He's the Mbappe is best. अलग level. Yeah. So, Mbappe, and bro. Haaland is just. I somehow feel Haaland is, of course, what he has done is good, but उसमें थोड़ा सा मीनो रॉयलो का मीडिया वाला हाइप भी है, जो वो पैसे खिलाता है रिपोर्टर्स को और उन सबको. No disrespect to Haaland, but Mbappe, bro, we have seen what he does. We have seen yes, what he does on the pitch. I haven't seen Haaland से उतना ज़्यादा, अपने उसमें. I mean, he has done it in Bundesliga, but and Mbappe also plays in League League One, which both we can say are farmers. But I think Mbappe, bro, no doubt. Mbappe has got a World Cup also, यार. मतलब Mbappe के पास World Cup भी है. Not the only criteria to justify him, but as a player also. he's fantastic Mbappe, literally. एक बार जो And बॉल पीछे से जाती है और जो उसका रन बनना स्टार्ट होता है ना, आई no one can डोंट stop सी him. एनी. कोई नहीं रोक सकता यार. No one ही can stop him. इज द फास्टेस्ट. या He can be the cheat code for any team, मेरे हिसाब से. या तो PSG हाँ, ही इज द चीट कोड ब्रो. cheat code. और एक गोल जो उसका ऑफसाइड भी रूल हो गया, जो उसने मारा था कोर्टवा पे जल्दी नियर से पोस्ट पे. ब्रो व्हाट अ फिनिश. yes, हाँ, जो फिनिश किया यार, मतलब नियर पोस्ट पे कोर्टवा को बीट कर दिया यार. इट इज अ मतलब बिग नियर पोस्ट पे खत्म big कर achievement. दिया यार कोर्टवा को, सोचो. वो Courtois रूल आउट near हो post. गया, वो अलग बात है. हाँ, बट दैट वाज अमेजिंग ब्रो. एम्बापे विल विन इट, फॉर श्योर. Before Haaland. आई थिंक वी ऑल a lot of people can agree to that. Yeah. एक चीज था कि मैंने कल पढ़ा कि हालैंड टू सिटी कंफर्म है ऑलमोस्ट. इज इट ट्रू? आई विल आस्क यू एज अ सिटी फैन. Don't know, bro. In football, you never know. It's football. एक फेब्रिजियो rumor. रोमानो का एक बहुत बढ़िया कोट था. इट्स अ रूमर, बट मैं एक कोट को फॉलो करता हूँ फेब्रिजियो रोमानो का, कि इन फुटबॉल यू नेवर नो. लाइक इन 6 hours, Messi was negotiating his deal with Barcelona. Okay, and at the 6th hour, he was discussing his wages with PSG. That's a quote from Anything? Fabrizio Romano. कि 6 घंटे पहले Messi was discussing his wages with Barcelona, and in 6 hours he was discussing it with PSG. So in football you never know. You never know. एक Anything can मतलब happen. स्किप ही मार देना. एक साल पहले कभी तूने जिंदगी में ऐसा सोचा होगा कि मेसी बार्सिलोना छोड़ सकता है लाइफ में? मैंने तो कभी मैंने नहीं तो नहीं सोचा सोचा था. But it still happened. So in football you never know. सही बात है. We never know what will happen, what will do. And I will end the stream by asking you one thing. What is happening with Chelsea? मतलब पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं फुटबॉल में. आई डोंट फील इट इज फेयर. They don't have the money to buy the fuel. What are your opinions about that? Chelsea saga. ब्रो मैंने एक पोस्ट भी डाला था. सी आई somehow Yes, feel कि I politics have and I have football replied to should that. be. हाँ. मैंने रिप्लाई भी किया था उस पोस्ट पे. Is it necessary or not? हाँ. Yeah, I mean, I somehow feel that football should be kept aside of politics. It is not your playground where you can, just as a fan, I don't feel it's good with whatever on the politics side it is happening. It is ठीक है, वो 2 countries will fight, the leaders will fight, leaders will shake hand at the end of the day. But at the fan should not suffer. Like football should be kept aside of everything. That's the objective that I see आगे भी कि it should be kept aside from politics at all means. I mean, but we all know कि वो कभी होने नहीं वाला. Football and politics will be always together, चाहे वो FIFA के अंदर हो, चाहे वो UEFA के अंदर हो, चाहे वो हर चीज के अंदर हो. But my ideology is very different. Is that I don't want any politics near to football. That's it. So that's it for today. And we are literally glad to have you in our entire stream. It was very honored to be with you. Hello. Yeah, thank you. मतलब थोड़ा अटका यार अभी वापस. हाँ, आ गया. Yeah. So guys, like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon for the latest notification. और साथ साथ टैकल फ्रॉम बिहाइंड वाला भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा.
इट्स अ ऑसम चैनल एंड इंस्टा पे तो सबको पता ही है कहाँ है क्या है, उसका तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एंड प्रणय भाई, थैंक्स फॉर कमिंग। आई होप यू एंजॉयड द स्ट्रीम विद अस। Thanks a lot, Son. Thanks for having me, man. And I really enjoyed it, man. I hope to be back. Like जब भी तू मेरे को मैसेज करेगा, I'm very very glad to be back. And मतलब डिस्कस मेरे से तो फुटबॉल डिस्कशन तो कितना भी करा लो यार. So I'm really glad and मतलब I'm just very happy कि तूने मेरे को बुलाया. And we'll do it very मतलब आगे जब भी तेरे को बुलाना हो, then just you have my number, just message me up, and we'll definitely do something together also. Yes. तो चलो, लेट्स एंड इट। ओके, बाय। Right.